But there is, one thing to note. So here we are considering the undirected graph. That is, we don't have any directions on the edges, right? We don't have any directions on the edges. This is an undirected graph. Okay. You can also assume the undirected graph as bidirectional graph. Okay, as a bidirectional graph. Okay. So whenever we represent a undirected graph using the adjacency matrix, typically we observe the symmetry. That is, if you observe a matrix, whenever we represent a directional graph, okay? So whenever we represent a undirected graph using the adjacency matrix, typically we observe the symmetry. That is, if you observe this triangular matrix, that is the upper triangular matrix, okay, with the lower triangular matrix, you can see it's almost same, like it is exactly same. Okay, whatever values you have on the upper triangular matrix are exactly same as the values in the lower triangular matrix. We also call this as a symmetry. Okay, because the upper triangular matrix is exactly equivalent to the lower triangular matrix, and this happens in the case of undirected graphs because we see that 1 and 2 are connected to each other. So when we are representing the edge from 1 to 2, that is from 1 to 2, we have it as 1. And also when we are representing from the node 2 point of view, that is 2 to 1, here also we have an edge, right? So the same edge is represented as 1 to 2 and also 2 to 1. Okay, that's why even in triples we represented this edge, with one of the triplet, that is 1 to 2, and there is another triplet with 2 to 1, right? So this is the case of undirected edges, but we have different other types of graphs. So we can also have a directed graph. Okay, so this is the case of undirected edges,
but we have different other types of graphs. So we can also have a directed graph. Okay. So just to give you an example, let's consider the social network. Okay, social network. Okay. So we have, we have Facebook as a social network. We also have, Twitter as a social network. Okay. Let's try to interpret these two things. So in Facebook, what are the nodes? In Facebook, the nodes are users, right? In Facebook, users are connected to each other. And then what relation does the users are connected to each other in Facebook? On the friendship relation, right? On the friendship relation. Okay. Let's say 1 and 2 are friends in Facebook. So we create an edge between them. Let's say 2 and 4 are friends in Facebook. So we create an edge between them. And if you observe the relations here, so it's pretty, it's straightforward. There aren't any directions, right? That is, if 1 is friend of 2, then it also states that 2 is friend of 1, right? Similarly, if 2 is friend of 4, it also states that 4 is also friend of 2. There aren't any directions, or you can assume this as a bidirectional graph, okay? Bidirectional graph. But in case of Twitter, this won't be the case, right? In Twitter, you can follow node 2. Let's say 1 can follow node 2, but it's not necessary that 2 should follow back 1. Similarly, let's say 2 is following to node 4, but it's not necessary that 4 should follow back 2, right? So in the case of Twitter, we have the directed edges on the follows relation. Okay. Only one of these nodes can follow each other, right? Or it can be bidirectional, right? One node case, right? In Twitter, you can follow. In case of Twitter, this won't be the case, right? In Twitter, you can follow node 2. Let's say 1 can follow node 2, but it's not necessary that 2 should follow back 1. Similarly, let's say 2 is following to node 4, but it's not necessary that 4 should follow back 2, right? So in the case of Twitter, we have the directed edges on the follows relation. Okay. Only one of these nodes can follow each other, right? Or it can be bidirectional, right? That is, one can follow two, even two can also follow one. Okay. But directions are necessary in case of Twitter. But whereas in the case of Facebook, the directions are not required, because the friendship relation is like the both ways. It's a bidirectional. If one is friend of two, it also states that two is friend of one, right? So in case of directed, you just remember the Twitter graph. In case of undirected, just remember the Facebook graph. And we have also seen that in the case of undirected graphs, the adjacency matrices will be symmetric. Case of undirected graphs, the adjacency matrices will be symmetric. Okay. The adjacency matrices will be symmetric. But this won't be the case in the directed graphs, because let's say we have the direction only from 1 to 2. Okay. In this case, how do we represent in the adjacency matrix? So we put from 1 to 2, we put 1 in this matrix. But from 2 to 1, we put as 0. Okay. And we have the direction only from 1 to 2. Okay. In this case, how do we represent in the adjacency matrix? So we put to the directed graphs, because let's say we have the direction only from 1 to 2. Okay. In this case, how do we represent in the adjacency
adjacency matrix case in the directed graphs, because let's say it is symmetric. Okay, the adjacency matrices will be symmetric, but this won't be the case in the directed graphs, because let's say we have the direction only from 1 to 2. Okay, in this case, how do we represent in the adjacency matrix? So we put from 1 to 2, we put 1 in this matrix, but from 2 to 1, we put as 0. Okay, because there is direction only from 1 to 2, but not from 2 to 1. Okay, so the adjacency matrices will be similar only in the case of undirected, but not in the case of directed. And there can be one other variant of graph. Those are weighted and unweighted graphs. In this example, we don't have any values on the weights, right? We can just see that node 1 is connected to node 2 and node 2 is connected to node 4. See that in this example, we don't have any values on the weights, right? We can just see that node 1 is connected to node 2 and node 2 is connected to node 4. But we are not representing any values on the edges. But in connected to node 4. But we are not representing any values on the edges. But in some of the graphs, we can have values on the edges. Let's say something like 100 or 200, Typically in most of the graphs, these numbers say how good these two nodes are connected to each other. That is, the numbers on the edges represent the strength of the connections in the graph.
In some of the examples, we can have, the weights on the graphs. So when we have the weights on the graph, so in the adjacency matrix representation, instead of keeping it as 1, we can actually represent the weight of the edge. Okay.
it as 1, we can actually represent representation. Instead of keeping it as 1, we can actually represent the weight of the edge. Okay. Something like 100, 200, like whatever weight that you have on the edge, you can represent that weight on the adjacency matrix instead of keeping We'll be having around it today. In that particular video specifically, today we are going to discuss about lower triangular matrix and upper triangular matrix exactly. Let's begin the session. Before we start, let me just introduce myself first. For those members who don't know about me, my name is Vishwadeep, working as a channel leader for this channel and as a plus educator also on Unacademy platform. This is my profile. Overall 14 plus years of teaching experience, in that 11 a craving और कोशिश कर नेम रेडमी के ताकि आपको मिल डाउनलोड आप मेरा आपको क्लासेस प्रोफाइल को पहुंचना के मार्केट में रीजनल आइकन्स ऐसे कर सकते हैं और सब कुछ एक साथ आपको कोड बहुत बेसिक। इफ यू गाइस आर स्टोरेज की दो स्कीम्स क्या थी, एक तो रो मेजर ऑर्डर और एक कॉलम मेजर ऑर्डर, है ना। फॉर्मूला याद है, लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला याद है, बेसिक फॉर्मूला याद है। पहले जितनी रोज स्टोर हुई उनमें एलिमेंट गिन लो, फिर उस लास्ट वाली ith रो में कितने एलिमेंट्स हैं वो। यहां पे हमने देखा था पहले जितने कॉलम्स स्टोर हुए हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो और फिर लास्ट कॉलम jth कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं वो, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता क्या है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक n क्रॉस n का ओरिजिनली n क्रॉस n का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लेके आया हूँ बना के, ये देखो 4 क्रॉस 4 का आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक और चीज मैंने यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से ले रखा है। सिंपलिसिटी इसलिए क्योंकि मुझे एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, इसलिए ताकि आपको एक बार कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए तो बाकी सारी चीजें इजी हो जाएगी, इसलिए ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से लिया मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए, और ये रहा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो और उसके नीचे के एलिमेंट्स ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके नॉन जीरो या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली काम के हैं। लोअर ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल बनाया हमने लोअर वाला, कैसे, डायगोनल को लेके, डायगोनल एलिमेंट्स और उसके नीचे के एलिमेंट्स सारे हमने ले लिए, इसके बाहर के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो, ये सारे ऑल जीरो, जितने भी बाहर है ना ट्रायंगल के बाहर वो सारे जीरो हैं, बचे हुए नॉन जीरो। अच्छा, अभी अगर मैंने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट की है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट a ऑफ ij में अगर i j से छोटा है, 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 अगर i की वैल्यू j से लेसर है तो वो सारे एलिमेंट a ऑफ i j के जीरो होंगे। क्या आप मुझे वेरीफाई कर सकते हो कि क्या जो मैंने कहा वो सही है? तो अगर किसी ने मुझसे बोला कि मुझे a ऑफ i j एक्सेस करना है, ओके ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू दे सकता है तुमको, मैं बोलेगा मैं डायरेक्ट वैल्यू दे सकता है कैसे, इट शुड बी 0 इफ i लेस देन 0, i लेस देन j। अगर i की वैल्यू j से छोटी है तो ये वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। इस केस में आप देख सकते हो ये सारे जीरो है, जो मेरे बाहर के एलिमेंट सारे जीरो, बचे हुए ही नॉन जीरो है। तुम लोग सुन पा रहे हो मेरे को? मैसेज मिल रहे हैं, पता नहीं क्या टर्मिनल प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ एक ही चीज देख पा रहा हूँ, 1 इज वाचिंग, मेरे को नंबर ऑफ वाचिंग जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ठीक से पिक नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, a ऑफ i j 0 नॉन जीरो अदरवाइज, ठीक है। तो मुझे एलिमेंट समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट जीरो है अगर ये मेरे मैट्रिक्स के या लोअर ट्रायंगल के बाहर है बचा हुआ, यस ये वाला एलिमेंट जो है मुझे एक्चुअल में काम का है। अच्छा, अगर मुझे ऑलरेडी पता है मेरे मैट्रिक्स के या लोअर ट्रायंगल के बाहर है बचा हुआ, यस ये वाला एलिमेंट जो है मुझे एक्चुअल में काम का है। अच्छा, अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि इतने सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इनको मेमोरी में रख के क्या हम स्पेस खराब करने की कोशिश करेंगे? नहीं। जैसे आईआईटी को पता होता है कि ये स्टूडेंट काम का नहीं है तो फिर क्या आईआईटी उसे एडमिशन देके और अपनी एक सीट खराब करेगी? नहीं करते ना, ऑफ कोर्स। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आईआईटी पहुंच नहीं पाते, जितने भी गेट एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें से 77000 लोगों ने इस बार गेट लिखा कंप्यूटर साइंस में, सारे लोग आईआईटी थोड़ी पहुंचेंगे, कुछ लोग पहुंच पाएंगे बाकी के नहीं, है ना। चलो, तो एक सिंपल सी बात जो मैंने आपको कहा वो ये कि अगर एलिमेंट जीरो है, हमें पता है कि जीरो है ये, तो इनको स्टोर क्यों करना नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो स्टोर्ड एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास? 3 4 से 4। आप देख सकते हो सबसे लास्ट वाली रो जो है उससे हमने कितने एलिमेंट्स उठाए? सारे एलिमेंट।
तो अगर आपके पास ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता तो मैं कह सकता था कि पहली रो से हमने एक एलिमेंट स्टोर किया, सेकंड से सेकंड 2, थर्ड से 3, फोर्थ से 4 एंड nth रो से n, क्योंकि n क्रॉस n का हमारे पास मैट्रिक्स है, nth रो से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने उठाए और टोटल हमारे पास हो जाएंगे ये n into n plus 1/2, इतने एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे। ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल हम देखेंगे 4, n की वैल्यू 4 है, 4 क्रॉस 4 का एग्जांपल 4 into 5 20 डिवाइड बाय 2, 10 एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट हम स्टोर नहीं करेंगे, 10 एलिमेंट स्टोर करेंगे। देखो एक बार जरा समझ में आया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड लाइक दैट वे। चलो ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कैसे कर सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो या तो रो मेजर ऑर्डर की हेल्प से या कॉलम मेजर ऑर्डर की हेल्प से। स्टोर नहीं है 4 थर्ड 4 से 4 एंड nth रो से n, क्योंकि n क्रॉस n का हमारे पास मैट्रिक्स है, nth रो से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने उठाए और टोटल हमारे पास हो जाएंगे ये n into n plus 1/2, इतने एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे। ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल हम देखेंगे 4, n की वैल्यू 4 है, देखो एक कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो या तो रो मेजर ऑर्डर की हेल्प से या कॉलम मेजर ऑर्डर की हेल्प से। सो यू वर्क सो हार्ड डे नाइट ऑन प्लस वन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता है कहते हैं मुझे कोई नॉलेज इतनी कांस्टेंट आते हैं उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम मेमोरी सेव करने के लिए आधे एलिमेंट को स्किप कर देंगे? यस। चलो तो देखते हैं सबसे पहले कैसे स्टोरेज होगा। अगर रो मेजर ऑर्डर में स्टोरेज है तो देखो ये ही एलिमेंट हमें स्टोर करना है। सबसे पहले a11 स्टोर कर दिया हमने, ओके। अब पहली रो से इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं जो स्टोर करने का है, सेकंड रो पे पहुंच जाओ, ओके। लेट्स गो टू द सेकंड रो। द सेकंड रो विल बी हैविंग टू एलिमेंट्स a of 2 1 and 2 2, बस उसके आगे के एलिमेंट स्टोर नहीं करने। क्यों? क्योंकि सर आपने तो कहा जो जीरो है उनको छोड़ दो। Your COA lectures push me to go for gate. I hope my COA lectures and other lectures and motivations and guidance can push you to enter into IIC और IIT also. फिर आप मुझे एक रोलेक्स की घड़ी जो है गिफ्ट करोगे, है ना? मैं बड़ा खुश होऊंगा। चलो नेक्स्ट थर्ड से a of 3 1, a of 3 2 and a of 3 3, ये तीन एलिमेंट आपने थर्ड रो से स्टोर किए और बचे हुए फोर्थ रो से आपने चार एलिमेंट स्टोर किए, वो हैं a of 4 1, 4 2, 4 3 and 4 4। आप लोगों को रिलेटिव इंडेक्स नाम की एक चीज पता है? रिलेटिव इंडेक्स नाम की एक चीज पता है? कोई बात नहीं, एवरीथिंग you will be understanding. Relative index means how many number of elements are there before an element. So if I want to just write down the relative index for these elements in the memory, so this is the storage in the memory based on row measure order. I have done it, मैंने कर दिया ये, है ना, स्टोरेज कर दिया। अभी मैंने अगर देखा कि a of 1 1 के पहले मेमोरी में कितने एलिमेंट स्टोर किए मैंने 0, यहाँ पे इसके पहले 1, इसके पहले 2, इसके पहले 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया हमारा रिलेटिव इंडेक्स हर एक एलिमेंट का। क्यों लिखा? क्योंकि हमें जब एड्रेस निकालना होता है ना, कैलकुलेट करना होता है एड्रेस, तो इनकी जरूरत लगती है। जैसे कि स्टार्टिंग एड्रेस हमने मान लिया 200, तो एक एक एलिमेंट अगर हम मानते हैं, अज्यूमिंग ईच एलिमेंट साइज इज इक्वल टू 2 इन द मेमोरी और बेस एड्रेस हमने मान लिया 200, तो हम एड्रेसेस लिख देते हैं यहाँ पे 202, 204, 206, 208, 210, 202, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अभी अगर आपसे कोई बोले एड्रेस निकालो भैया, a of ij मैंने दे रखा है, a of ij दे रखा है, एड्रेस निकाल, आई हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एलिमेंट a of ij। अभी देखो ना फॉर्मूला बदल जाएगा। क्यों बदलेगा सर? रो मेजर 2d अरे 2d अरे। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं कहता हूं कि आपको फोर्थ रो के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप बोलोगे कि सर इसके पहले की जितनी भी रोज आपने स्टोर की है उनके सारे एलिमेंट पहले काउंट करो रो वाइज, क्योंकि रो वाइज स्टोरेज है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहली रो के सारे एलिमेंट हमने स्टोर ही नहीं किए, सेकंड के सारे उन्हें। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं कहता हूं कि आपको फोर्थ रो के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप बोलोगे कि सर इसके पहले की जितनी भी रोज आपने स्टोर की है उनके सारे एलिमेंट पहले काउंट करो रो वाइज, क्योंकि रो वाइज स्टोरेज है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहली रो के सारे एलिमेंट हमने स्टोर ही नहीं किए, सेकंड के भी सारे स्टोर नहीं किए, थर्ड के भी सारे स्टोर नहीं किए, तो इसके पहले जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उनमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे इनटू n नहीं हो पाएंगे। कल हमने लिखा था अरे इसको काउंट करो रो वाइज, क्योंकि रो वाइज स्टोरेज है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहली रो के सारे एलिमेंट हमने स्टोर ही नहीं किए, सेकंड के भी सारे स्टोर नहीं किए, थर्ड के भी सारे स्टोर नहीं किए, तो इसके पहले लिखता हूं कि आप अभी देखो ना फॉर्मूला बदल जाएगा। क्यों बदलेगा सर? रो मेजर 2d अरे 2d अरे। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं कहता हूं कि आपको फोर्थ रो के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप बोलोगे कि सर इसके पहले की जितनी भी रोज आपने स्टोर की है उनके सारे एलिमेंट पहले काउंट करो रो वाइज, क्योंकि रो वाइज स्टोरेज है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहली रो के सारे एलिमेंट हमने स्टोर ही नहीं किए, सेकंड के भी सारे स्टोर नहीं किए, थर्ड के भी सारे स्टोर नहीं किए, तो इसके पहले जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उनमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे इनटू n नहीं हो पाएंगे। कल हमने लिखा था, याद है? तो कल मैंने रो मेजर ऑर्डर में फॉर्मूले में लिखा था i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i, कि पहले स्टार्टिंग नंबर ऑफ रो से लेके i माइनस 1 रो तक इतनी नंबर ऑफ रोज थी और हर एक रो में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, बट ये काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक रो में कल n एलिमेंट स्टोर हो रहे थे, आज नहीं है। ये देखो सारे एलिमेंट कहां स्टोर है इसके और इस रो के नहीं है। एक रो में कल n एलिमेंट स्टोर, हर एक रो में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, बट ये काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक रो में कल n एलिमेंट स्टोर हो रहे थे, आज नहीं है। ये देखो सारे एलिमेंट कहां स्टोर है इसके और इस रो के नहीं है, इस वाली के नहीं है। तो फिर अगर सारे नहीं है तो फिर क्या नहीं हो पाएगा, है ना? तो ये जो टॉपिक का नाम मैंने आज दिया है स्पार्स मैट्रिक्स, उसका मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स स्टोर नहीं होते हैं, है ना। डेंस मतलब सारे एलिमेंट स्टोर करते हैं, स्पार्स मतलब आप सारे एलिमेंट स्टोर नहीं करेंगे, कुछ एलिमेंट छोड़ देंगे, क्यों जरूरत नहीं है। क्यों? जीरो थे इस एग्जांपल के लिए, तो इनको छोड़ दिया तो फिर बचे हुए एलिमेंट को स्टोर किया तो क्या लोकेशन का फॉर्मूला बदलेगा? ऑफ कोर्स बदलेगा। ढूंढो बेटा, जस्ट चिल, समझो जरा यहाँ पे कि ये फॉर्मूला बदलेगा। अगर ये फॉर्मूला बदलेगा तो फिर ये मिस्टर इंडिया को देना पड़ेगा। वो वाला मिस्टर इंडिया नहीं, तुम मिस्टर इंडिया सारे मिस एंड मिस्टर विच एवर वॉट एवर। तो अगर ये फॉर्मूला बदलेगा, बेसिक तो सेम टू सेम है, बेस एड्रेस प्लस w इंटू रिलेटिव इंडेक्स, और इसके आगे का भी इनफैक्ट सेम है कि हम अगर ith रो पे जाते हैं 2d एरे में, ith रो में है और jth कॉलम में है, तो पहले लोअर बाउंड ऑफ i से लेके i माइनस 1 रो के सारे एलिमेंट को रो वाइज स्टोर करके बताओ कितने एलिमेंट्स आपने स्टोर किए, सारे काउंट कर लो। ये कर लेंगे, उसके बाद में jth कॉलम तक पहुंचने के लिए इस ith रो में कितने एलिमेंट आए वो काउंट कर लेंगे। जो कल का फॉर्मूला था वो सेम टू सेम है।
सेम टू सेम है. सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट एज इट इज नाउ ऑल्सो. लुक एट दिस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज फ्रॉम लोअर बाउंड ऑफ आई टू आई माइनस वन प्लस आगे क्या लिखा था उस ith रो में हर एक रो के लिए इन दैट पर्टिकुलर रो के लिए लोअर बाउंड ऑफ जे से लेके जे माइनस वन कॉलम तक कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारा आया था. सर क्या आया था वो याद है? क्या आया था वो? जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे आ गया था, है ना निशु? वो जेड मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जेड मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये इसलिए क्योंकि ये जो चीज है ना इसरो वगैरह में पूछी गई है रिसेंट में. इसरो और बाकी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं जो कल हमने देखा था उससे अलग आएगा. क्यों अलग आएगा? क्योंकि हमारे सारे रो के सारे एलिमेंट्स स्टोर नहीं है इन रो कॉलम में. रो रुलाई दिया हमें. चलो देख लेते हैं. हमें अलग आएगा क्योंकि हमारे सारे रो के सारे एलिमेंट्स स्टोर नहीं है इन रो कॉलम में. रो रुलाई दिया हमें. चलो देख लेते हैं. हमें लोअर बाउंड ऑफ आई. लोअर बाउंड ऑफ आई क्या था? फर्स्ट रो है ना. रो नंबर 1 से लेके i माइनस 1 तक के सारे एलिमेंट्स को कैप्चर करना है कि अगर ये ith रो है, ओके ये ith रो है तो उसके पहले जितनी भी रोज हैं उनके एलिमेंट्स को काउंट करना है. ठीक है, कर लेते हैं. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इन द फर्स्ट रो जो हमने स्टोर किए? अरे ओ सांबा कितना एलिमेंट था रे पहला रो में? सरदार एक. बताओ सांबा नंबर ऑफ से i माइनस 1 रो तक एलिमेंट आएंगे. पहले में एक है, दूसरा हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1. टोटल कितना होगा? ये 1 प्लस 2 प्लस यहां से यहां कैसे आया ये जाके और एक वीडियो मिल जाएगा. एक वीडियो ये देखो हो गया. क्योंकि पता है बहुत सारे नंबर हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. तो ये देखो अगर पहला रो स्टार्ट हुआ ये वाला तो इस पहली रो में कौन सा कॉलम नंबर पहला है? फर्स्ट वाला. सेकंड रो के लिए भी फर्स्ट वाला ही कॉलम फर्स्ट है. थर्ड रो के लिए भी फर्स्ट कॉलम ही फर्स्ट है. और इस वाली रो के लिए भी फर्स्ट कॉलम ही फर्स्ट है. मतलब कोई भी रो आप बताओ मुझे कॉलम नंबर 1 इज द लोअर बाउंड जो आपने स्टोर किया है. ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये स्टोर है. हां जी. तो इसका मतलब ये है कि लोअर बाउंड ऑफ जे इज 1. अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही था, दिख ही रहा था, पर आगे आने वाली चीजों में आपको ये वेरी होता हुआ दिखेगा, अलग आता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने बताया आपको ये चीज. तो देखो मैंने कहा था ये जो है W इंटू ये आपको देगा रिलेटिव इंडेक्स. इसको ना वेरीफाई करते हैं या 4 3 से वेरीफाई कर लेते हैं. a ऑफ 4 3 के लिए i की फर्स्ट ये जॉब टू i माइनस 1 बाई 2. इस वीडियो इस चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके और एक वीडियो सर्च करो हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट अलोंग विद जॉब. टोटल नंबर ठीक है. तो हम यहाँ पे रख देते हैं किंग प्रोफेशनल्स. मिल जाएगा, मेरा नाम लिख लेना, उसमें मिल जाएगा वीडियो. ये देखो हो गया, ये आ गया टोटल नंबर. ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं बेस प्लस w इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम रो नंबर 1 टू i माइनस 1 कितना हो जाएगा? i इंटू i माइनस 1 बाई 2 प्लस j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j. अच्छा हमें क्या है ना, लोअर बाउंड ऑफ j हमेशा एक पर्टिकुलर रो के लिए 1 होगा या नहीं होगा ये वेरीफाई करना पड़ेगा. क्योंकि पता है बहुत सारे नंबर हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. तो ये देखो अगर पहला रो स्टार्ट हुआ ये वाला तो इस पहली रो में कौन सा कॉलम नंबर पहला है? फर्स्ट वाला. सेकंड रो के लिए भी फर्स्ट वाला ही कॉलम फर्स्ट है. थर्ड रो के लिए भी फर्स्ट कॉलम ही फर्स्ट है. और इस वाली रो के लिए भी फर्स्ट कॉलम ही फर्स्ट है. मतलब कोई भी रो आप बताओ मुझे कॉलम नंबर 1 इज द लोअर बाउंड जो आपने स्टोर किया है. ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये स्टोर है. हां जी. तो इसका मतलब ये है कि लोअर बाउंड ऑफ j इज 1. अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही था, दिख ही रहा था, पर आगे आने वाली चीजों में आपको ये वेरी होता हुआ दिखेगा, अलग आता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने बताया आपको ये चीज. तो देखो मैंने कहा था ये जो है W इंटू ये आपको देगा रिलेटिव इंडेक्स. इसको ना वेरीफाई करते हैं या 4 3 से वेरीफाई कर लेते हैं. a ऑफ 4 3 के लिए i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 3 है ना. n क्रॉस n 4 क्रॉस 4 का आपके पास एरे है तो n की वैल्यू 4. ठीक है, ये यहाँ पे रख के देखते हैं क्या आता है हमें. इसमें रख के देखते हैं. i की वैल्यू 4 रखो. 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस j माइनस 1 3 माइनस 1 करके देखो कितना आ रहा है बताओ तो. 4 2 6 प्लस 2 8. ये देखो रिलेटिव इंडेक्स a ऑफ 4 3 का 8 आ गया. आ गया 8 है ना. ये आया 6 प्लस 2 8. तो क्या मतलब a ऑफ 4 3 के लिए रिलेटिव इंडेक्स 8 8 इंटू 2 16 प्लस 200 216 का एड्रेस भी आ गया. तो जो हमने फॉर्मूला निकाला वो ठीक ठीक काम कर रहा है. बाकी और के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो आप. 3 3 के लिए वेरीफाई करो. 3 3 के लिए वेरीफाई करोगे तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज 3 प्लस 2 3 प्लस 2 6. ये देखो 3 3 के लिए को 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज 3 प्लस 2 5. यस 3 प्लस 2 5 ये आ गया 5. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपके पास कोई भी आप इनमें से इंडेक्स रखोगे आईओजे की वैल्यू इस फार्मूला में रिलेटिव इंडेक्स सेम आएगा. बेस प्लस डब्ल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सेम एड्रेस आ जाएगा. तो जो हमने निकाला ये फार्मूला ये सही है. जी हां 1990 में समवेयर आई डोंट नो व्हिच ईयर 97 या 98 में ये वाला फार्मूला पूछा गया था एज इट इज कि अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टोर किया है एक लीनियर मेमोरी में इस तरीके से कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हें स्टोर किया जाए, जीरो को हटा दिया जाए, तो फिर बताओ कि उसका किसी एक एलिमेंट का एड्रेस लेने के लिए फार्मूला क्या बनेगा. ये चीज कहां पूछी गई थी? गेट में पूछी गई थी बेटा. ठीक है, बहुत पहले पूछी गई थी. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम मेजर ऑर्डर भी तो स्टोर हो सकता है. इसको हम एज अ कॉलम मेजर ऑर्डर भी तो स्टोर कर सकते हैं. कर सकते हैं. कैसे करेंगे सर? आप जैसे बताओ तो वैसे कर लेंगे है ना. तो सबसे पहले तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो. ये कॉलम वाइज स्टोर कर दो. जी हाँ ले समोसा बना दिया मैंने. लोअर बाउंड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल वो चेंज हो सकता है, पर अभी सिंपलिसिटी के लिए हम 1 ले रहे हैं ताकि समझ में आए कंसेप्ट. a11 a21 a3 1 a4 1 a2 2. सेकंड कॉलम हमारा 2 2 से स्टार्ट होता है.
3 2 और 4 ये देखो पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम है ना, तो ये पहला कॉलम यहाँ तक खत्म, सेकंड कॉलम यहाँ तक खत्म, थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट है हमारे पास, 3 3 और 4 3, और लास्ट कॉलम में हमारे पास 4 4 एलिमेंट है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। रिलेटिव इंडेक्स लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो कि जब एड्रेस आए तो रिलेटिव इंडेक्स में हम सेकंड कॉलम हमारा 2 2 1, समोसा बना दिया मैंने। लोअर बाउंड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल वो चेंज हो सकता है, पर अभी सिंपलिसिटी के लिए हम 1 ले रहे हैं ताकि समझ में आए कंसेप्ट। A11 A21 A31 A41 A22, सेकंड कॉलम हमारा 2 2 से स्टार्ट होता है, 3 2 और 4 ये देखो पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम है ना, तो ये पहला कॉलम यहाँ तक खत्म, सेकंड कॉलम यहाँ तक खत्म, थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट है हमारे पास, 3 3 और 4 3, और लास्ट कॉलम में हमारे पास 4 4 एलिमेंट है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। रिलेटिव इंडेक्स लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो कि जब एड्रेस आए तो रिलेटिव इंडेक्स मैच हो जाए। पहले एलिमेंट के पहले कितना एलिमेंट्स है, कोई भी नहीं, जीरो, इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एड्रेसेस देखेंगे, A11 का एड्रेस अगर हम 200 माने अज्यूम करें, सेम चीज 4 206, base address 200, each element takes size 2 14 16 and 18। ठीक है, चलो I will replace by J and vice versa in formula। लोअर ट्रायंगुलर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग होगा, इसका फॉर्मूला बहुत अलग होगा। निशु कुमार जी यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। चलो तो कैसा चलेगा बताता हूँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें कैसे चलेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी हमें कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टोरेज तो मिल गया, हाँ जी, बेसिक फॉर्मूला भी हमें पता है, वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है लोकेशन का बेस प्लस W इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कॉलम नंबर J, नहीं फर्स्ट से J-1, कॉलम नंबर 1 से लेके J-1 तक के सारे एलिमेंट्स कॉलम वाइज जो आपने स्टोर किए हैं वो, प्लस I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I, है ना, यही फॉर्मूला था, देखो एक बार जरा, यही था ना। अभी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे 1 से लेके J-1 कॉलम तक के। अच्छी बात है सर, निकाल लेते हैं सर, आप बोलते हैं तो हम सब कर लेंगे सर, करते तो हैं। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपने स्टोर किए हैं कहां पे, इन फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में कितना एलिमेंट आपने स्टोर किया, ये देखो अगर आपके पास J कोई ये कॉलम है ना, तो पहले आपने फर्स्ट कॉलम स्टोर किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सो कितने एलिमेंट्स आपने पहले कॉलम में स्टोर किए। अगर कॉलम नंबर आपने 1 दिया है तो उसमें चारों एलिमेंट्स स्टोर है, ऑल 4 एलिमेंट्स आर स्टोर, 4 व्हिच इज नथिंग बट n, लिख दूं यहां, अगर n क्रॉस n का एरे है अगर जनरलाइज्ड मैनर में, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने फर्स्ट कॉलम में यहां स्टोर किए, सारे के सारे एलिमेंट पूरा कॉलम स्टोर है, देख सकते हो आप, तो क्या हम n लिख दें, चलेगा, अच्छी बात है। अब सेकंड कॉलम हमारे पास ऐसे ही पूछा, बताओ n में -1 कॉलम तक के ही एलिमेंट चाहिए मुझे, दैट्स इट, -1 कॉलम J माइनस के इस कॉलम तक के सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं, पता करने हैं। तो मैं ये लास्ट वाली लाइन हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट्स पूरे काउंट करने हैं। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, अब तो J माइनस फर्स्ट कॉलम मुझे टोटल एलिमेंट्स काउंट करने हैं, कर लेते हैं। तो टोटल नंबर +1, ये ठीक है, तो n माइनस 3 अब तो n माइनस j n अलग, और ये प्लस n +2 तक n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस कुछ है, n प्लस 1 ऐड करने के लिए हो जाएगा, ठीक से करो, है ना, तो से अलग से हटा देते हैं, 6 एलिमेंट्स आ गए हमारे -2। YouTube पे जब मैं बोल देता हूं उसके 15 सेकंड होगा, हर स्टोर किया है। अभी देखो अगर आप J में आए तो पास इंक्लूडेड हम 4 में, इसमें अगर आपके पास 3 थर्ड है तो पहली वाली रो का पहला एलिमेंट आपके पास इस कॉलम के अंदर स्टोर्ड है, बट अगर कॉलम नंबर 2 पे आप जाओगे तो कॉलम नंबर 2 पे एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो लोअर बाउंड ऑफ I इस कॉलम के लिए का है, कॉलम नंबर 2 के
के अंदर रो नंबर अलग अलग है। अच्छा सर वापस जाते हैं, इसको वापस से चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या था। अगर हम रो मेजर ऑर्डर देख रहे थे तो हर एक रो के लिए पहला कॉलम कौन सा 1, 3 के लिए भी 1, 4 के लिए भी 1, क्योंकि रो मेजर था इसलिए हमने सब जगह 1 1 लिखा था कॉमन कॉमन, इसलिए यहाँ पे -1 कर दिया। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि कॉलम नंबर 1 के लिए पहला एलिमेंट रो 1 का है, कॉलम नंबर 2 के लिए पहला एलिमेंट रो 2 का है। कॉलम नंबर 2 के लिए रो 2 से स्टार्ट हो रहा है मेरा रो, यहाँ से नहीं, इसलिए मैंने यहाँ j एज अ लोअर बाउंड ऑफ i लिख दिया। i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i की जगह मैंने j लिख दिया। सर वेरीफाई तो करना पड़ेगा सर। 4 2 के लिए चेक कर लेते हैं, a ऑफ 4 2 के लिए इन मैट्रिक्स है तो s1 j डिवाइड बाय 2 माइनस 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है हमें तो बेस एड्रेस हमारे पास है 1000, w की वैल्यू है 4 और क्या दे रखा है, i की वैल्यू दे रखी है 4, j की वैल्यू है 2, n क्रॉस n के हिसाब से n वैल्यू जो दे रखी है वो है 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है ना। चलो अगर हम इसे रो मेजर ऑर्डर में एड्रेस निकालें तो रो मेजर ऑर्डर के लिए हमारे पास एड्रेस आएगा 1000 प्लस 4 इनटू क्या फॉर्मूला था, पीछे जाते हैं देखते हैं जरा। तो i इंटू आई माइनस 1/2, i इंटू आई माइनस 1/2 सबसे पहले है के लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 चाहिए। अभी यहां भी आप कितने एलिमेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉलम मेजर ऑर्डर के जैसे सॉल्व होगा, इसके कॉलम मेजर ऑर्डर को आप वो फॉर्म फिलअप कर देना, नहीं मिलता मुझसे कांटेक्ट कर ले कुछ भी करके। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में। ओके, तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 तो ऐसे मैट्रिक्स अक्वायर करेगा ये मैट्रिक्स, अब इसकी बात करें इस पर्टिकुलर। तो फॉर एग्जांपल अगर तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 व्हिच इज इक्वल्स टू 56। और ये अगर आपका ये आपका मैट्रिक्स अगर इंटीजर टाइप है, इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हो इंटीजर, और हम ये कितना बाइट्स लगा 112 बाइट्स। तो क्या हम इसको इस तरीके की आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एफिशिएंट तरीके से, एफिशिएंट किस टर्म में बात करें, मेमोरी के टर्म में। तो सिंपली इसमें नॉन जीरो एलिमेंट देखेंगे तो कौन-कौन से 1 2 3 स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी लग रही है आपकी, पहले डिस्कस करते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, तो अब देखते हैं एरे में किस तरीके से इस स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से एक हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये 2 डायमेंशनल एरे क्या बता रहा है, सबसे पहले क्या है कि रो नंबर क्या होगा आपका, कॉलम नंबर क्या होगा और वैल्यूज होगा। इस तरीके से स्टोर करेंगे। रो नंबर और कॉलम नंबर और वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ये आपकी क्या है फर्स्ट वैल्यू, ये किस रो में 0th रो 4th कॉलम है। तो सिंपली क्या करेंगे, रो क्या बता रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो 5 आपकी वैल्यू है उसका रो नंबर क्या है 0 और कॉलम नंबर क्या है आपका 4। तो इससे क्या करेंगे हम इस 5 वैल्यू को पता कर सकते हैं कि वो स्पार्स मैट्रिक्स में कौन सी लोकेशन पे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आपका 4, नेक्स्ट जो आपका नॉन जीरो एलिमेंट है वो आपका 4 है, तो 1 और सेकंड यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 4। नेक्स्ट आपका क्या है 6, तो 6 इसमें आ रहा है फर्स्ट रो एंड 6 कॉलम, तो फर्स्ट रो और 6 कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 6। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू 1 है, तो ये क्या आपका 2 सेकंड रो और 0th कॉलम, 0th कॉलम में वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हुआ, थर्ड रो में कोई भी एलिमेंट जीरो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं, फोर्थ में क्या आपका 8, तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम में जो नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है वो 8 आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है 3 नॉन जीरो एलिमेंट, वो कहां है फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम, फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट क्या आ रहा है आपका 3। नेक्स्ट आपका क्या 5 फिफ्थ रो में क्या है लास्ट एलिमेंट यानी द फिफ्थ रो सेवंथ कॉलम, तो फिफ्थ रो सेवंथ कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट कितना है 7। इस तरीके से इस स्पार्स मैट्रिक्स को हम इस तरीके से एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये चेक करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितना लगेगा 112 बाइट्स। इस पर्टिकुलर जो है रिप्रेजेंटेशन में कितनी मेमोरी लग रही है टोटल, इसमें देखा तो नंबर ऑफ रो कितने 3। ओके, 3 × 7 × 2 यानी हर एक अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 54 बाइट्स। तो यहाँ 54 बाइट्स है यहाँ। सो अब देखते हैं इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होता है, हम लोगों ने लिंक लिस्ट डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ कैसे ये नोड क्रिएट करते हैं और फिर एक नोड दूसरे नोड से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आपका रो नंबर, देन कॉलम नंबर, नेक्स्ट आपका वैल्यू यानी जो नॉन जीरो वैल्यूज है, और इस ब्लॉक में क्या है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ओके, तो अगर फर्स्ट नोड को देखेंगे तो यहाँ क्या बता रहा है ये यानी फर्स्ट नोड क्या डिनोट करेगा, जो आपकी स्पार्स जो नॉन जीरो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट नोड में होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वैल्यू क्या आपकी 4। नेक्स्ट आपका जो नोड है वो क्या बता रहा है कि नेक्स्ट आपकी जो नॉन जीरो वैल्यू रहेगी फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट रो सिक्स्थ कॉलम एंड उसकी जो नॉन जीरो वैल्यू क्या है 6 है। ये क्या आपका नेक्स्ट जो नॉन जीरो वैल्यू 1 है, 1 का आपका सेकंड रो 0th कॉलम, तो सेकंड रो 0th कॉलम में जो आपकी नॉन जीरो वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्या है 4 1 यानी फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम में जो नॉन जीरो वैल्यू वो 8 है, फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम, फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम में जो नॉन जीरो वैल्यू वो क्या 3। नेक्स्ट क्या फिफ्थ रो सेवंथ कॉलम, फिफ्थ रो सेवंथ कॉलम में क्या आपका ये फिफ्थ रो सेवंथ कॉलम में नॉन जीरो वैल्यू वो क्या आपकी 2 है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका यहाँ से ये लिंक हमने इस तरीके से दिखाया, यहाँ पर 6 रो सेकंड कॉलम, 6 रो सेकंड कॉलम में आपका क्या है जो वैल्यू है वो क्या आपकी नॉन जीरो वैल्यू 10 है। 6 रो फोर्थ कॉलम, 6 रो फोर्थ कॉलम में जो आपकी नॉन जीरो वैल्यू वो क्या है 7। और नेक्स्ट जो एड्रेस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये नल, नल का मतलब ये अब इसके बाद यानी ये आपका क्या है लास्ट नोड है, इसके बाद कोई भी अगर आपका नोड नहीं है तो लास्ट वाले का एड्रेस क्या हो जाएगा नल, क्योंकि आपका नेक्स्ट कोई भी नोड नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से हम लिंक लिस्ट it as 0 and 1. Okay, so we have seen the directed and undirected graphs. We have also seen the weighted and unweighted graphs. Okay, and there is also another class of graphs which are called homogeneous and heterogeneous graph. So homogeneous, as the name says, so this is an example for the homogeneous graph where all the nodes are of same type. Even in the case of Facebook, all the nodes are users, right? And in the case of Twitter also, all the nodes are users. All the nodes are of same type. And also all the edges are also of same type. So in the case of Facebook, all the edges represent the friendship relation. Whereas in the case of Twitter, all the edges represent the follows relation, right? So that is called homogeneous, where every node is of same type
and every edge is also of same type. But it is quite opposite in the and every edge is also of same type. But it is quite opposite in the case of heterogeneous graph. Okay, I'll give you an example for the heterogeneous graph. Okay, let's consider an example on the heterogeneous graph. Okay, so here let's consider the example of YouTube. Okay, let's consider example of YouTube. So what are all the different nodes you can have on YouTube? So you can have users as one set of nodes. And what can users do? Users can watch videos, right? So users can watch videos. Okay, I'll put it as W. And users can subscribe to the channels, right? So users can subscribe to the channels. So this is an example of the heterogeneous graph where we have three different types of nodes. Okay, we have users, we have videos, right? We also have channels. Okay, so we have three different types of nodes. And what are the relations we have? We have watched relation and we have subscription relation. So in the heterogeneous nodes, and what okay, so we have three different types of nodes. And what are the relations we have? We have watched relation and we have subscription relation. So in the heterogeneous graph, the nodes can be of different types. Also, the edges can be of different types. Okay, so this is an example for the heterogeneous graph. Okay, and so that's about the heterogeneous graph. And the next variant is called multigraphs. Okay, so far we have seen what are directed and undirected graphs, and what are weighted and unweighted graphs, what are homogeneous and heterogeneous graphs. Now let's see what are multigraphs. Okay, again, to give you an example, let me give you a simple example. So let's say you have an entity called employee. Okay, you have a node called employee, and let's say you have a different node called location. Okay, and also assume that multigraphs are also heterogeneous graphs, but there is something in addition to that. Assume that multigraphs are also heterogeneous graphs, but there is
employee, and let's say you have a different node called location. Okay, and also assume that multi-graphs are also heterogeneous graphs, but there is something in addition to that. Okay, let's say you have a relation between you have a node called employee, and let's say you have a different node called location. Okay, and also assume that multi-graphs are also heterogeneous graphs. But there is something in addition to that. Okay, let's say you have a relation between employee and location, that is employee lives in particular location. Okay, so this is one relation. But in case of multigraphs, between two pair of entities, there can be multiple relations that are possible. Okay, there can be multiple edges that are possible. Okay, so here we can say that employee lives in location. We can also say that employee works at location. Okay, we can also say that employee works at location. Okay, so between two pair of nodes or two pair of entity types, there can be two relation types. Okay, let's say employee lives in Bangalore, let's say employee works at Chennai. Okay, so there can be multiple relations between two nodes. Okay, so that's what the multi-graphs. Okay, so far we have seen all these different types of graphs.
the DGL library on our Google Colab. So after installing the DGL library, let's import DGL. Okay. So, and also one more point to note here. If you see in the official website, they are saying DGL is framework agnostic. That is, you can build your models using PyTorch, TensorFlow, or Apache MXNet. But by default, DGL comes with PyTorch. Okay, and also my personal favorite is PyTorch, and also there is bigger community for PyTorch. And better documentation and more model implementations are there for PyTorch in DGL. So I'm going with the PyTorch. Okay. So that's why along with the DGL, we also need to import the Torch library. Okay. So we don't need to install Torch separately. It will install along with the DGL installation. Okay. So I just imported DGL and Torch. So now let's try to create a homogeneous graph using DGL. Okay. So this is the graph which we have already seen in one of our previous videos, but only one change. So I just make this graph as a directed graph. So this is a directed homogeneous graph because all the nodes in this graph are of same type and all the edges in this graph are also of same type. And also, if you observe the node IDs in this graph, the node IDs are starting from zeros. But in our previous video, we have seen that the node IDs are starting from 1. But in DGL, everything is 0 indexed. So all the node IDs, edge IDs, so everything starts from 0. Okay. So now I'm just representing this directed homogeneous graph as a simple source node ID and destination node ID lists. Okay. So if you take any edge on this graph, every edge will have a source node and a destination node, right? So we can represent all these 8 edges using its source node ID and destination node ID. Okay. So I'm just representing all of these 8 different edges using their source node IDs and destination node IDs. So to create this graph, we have a method in DGL and every ID lists. Okay. So if you take any edge on this graph, every edge will have a source node and a destination node, right?
So we can represent all these 8 edges using its source node ID and destination node ID. Okay, so I'm just representing all of these 8 different edges using their source node IDs and destination node IDs. So to create this graph, we have a method in DGL called dgl.graph. Okay, so let's say I wanted to store my graph in the graph variable, and let's say I'm going to create the graph using dgl.graph method. And let's see what is the input that this method takes. Okay, so if you observe, there are different parameters that this method takes. Okay, but most of these parameters are they have like default values, so they are like optional parameters. Most of the parameters are optional, but data is the one that we need to pass. Let's see what is the format of data. Okay, so data refers to the graph data, and there are different ways that we can pass this graph data, and one of the ways is to pass the tuple of tensors. Okay, so it's a tuple which is having 2 tensors. So one tensor refers to the source nodes, the other tensor refers to the destination nodes. Okay, so before passing the input, just let's create the source node IDs and destination node IDs. So I'll create source node IDs. So I'll create it as a tensor. Okay, tensor of source node IDs. So what are our source node IDs? So these are all our source node IDs. Okay, so I'll put it as 0 0 0 1 1 2 2 3. Okay, and also let's create the destination node IDs. Okay, destination node IDs. Okay, again I'll create it as torch.tensor, and the values are 1 comma 2 4 2 3 3 4 and 4. Okay, so now this tensor represents our source node IDs, and this tensor represents our destination node IDs. Okay, so you can see there is a edge between node 0 and node 1. Similarly, there is an edge between node 0 and node 2, node 0 and node 4, so on. Okay, so now we have created 2 tensors, one tensor of source node IDs, other tensor of destination node IDs. Now DGL graph accepts a tuple of tensors, right? So now let's just pass a tuple of source node IDs. Okay, tuple of source node IDs and destination node IDs Okay, so let's also print the graph and see what it returns. Okay, so I am printing the graph here. So you can see it has returned a graph object with 5 different nodes. You can see the number of nodes are 5, and you can see the number of edges are 8. Okay, so this is how we can create a simple homogeneous graph using DGL graph method. Okay, let's see. So you can see it has returned a graph object with 5 different nodes. You can see the number of nodes are 5, and you can see the number of edges are 8. Okay, so this is how we can create a simple homogeneous graph using DGL graph method. Okay, in the previous video we have seen how to create the homogeneous graph using DGL. Okay, we have created a sample graph with 5 nodes and 8 edges using the DGL graph method. Okay, now let's see some more functionalities on these DGL graphs. Okay, so let's check for the nodes and edges. So we already have the graph stored in this graph object. So let's see the nodes on this graph. Okay, we can just call graph.nodes. So it will give you a tensor which is ranging from 0 to 4. If you see this graph, how many nodes do we have? We have 5 different nodes whose indices are starting from 0. Okay, so the node IDs are ranging from 0 to 4. Okay, so whenever we call graph.nodes, it will give us a tensor of node IDs. Okay,
Similarly, let's try to call graph dot edges. Okay. So graph dot edges returns a tuple of source node tensors and destination node tensors. Okay. It is the same tuple that we have passed as an input to the DGL graph. If you remember in the previous video, we have passed a tuple as an input to the DGL graph. So what is this tuple? So this tuple contains two tensors. One tensor is of source node IDs. The other tensor is of destination node IDs. So whenever we call graph.edges, it will again return the same as output. It will return two tensors, a tuple of tensors. Okay. The first tensor is the source node IDs. The second tensor is the destination node IDs. But let's say along with the source node IDs and destination node IDs, let's say I also wanted to see the edge IDs. For that, we just need to mention this parameter as form is equal to all. So this will return a triple. Okay. So you can see the first tensor in this triple refers to the source node IDs. The second tensor in this triple refers to the destination node IDs. The third tensor in this triple refers to the edge IDs. Okay. As we know in this graph, we have 8 different edges. So we are explicitly not passing the edge IDs, but the DGL.graph method will internally assign the edge IDs. Okay. So again, similar to nodes, the edge IDs are also ranging from 0 to total number of edges minus 1, that is 0 to 7. Okay. And the order of edges will be equivalent to the order of source
E A, ठीक है, this is not connected because ही है आपने like right here you just elements the column right or you will adjust statement there is zero they have not मतलब शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ 10 से कम होगी तो इसका मतलब डायमीटर